In Vermont's peaceful hills, Ethan and Amelia lived in a charming farmhouse. मुख्तसर कहानी, नन्हा परंदा और दोस्ती. Aujourd'hui, English. Aujourd'hui. एक नन्हा परंदा अपने घोंसले से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही वो में ब्लिंद हुआ, वो नीचे गिर गया. करीब ही एक खरगोश बीता था, जिसने उसे गिरते हुए देखा. खरगोश दौड़कर आया और नन्हे परंदे को उठाया. तुम देखो, खरगोश ने पूछा. परंदे ने अफसरदगी से कहा, मुझे उड़ना नहीं आता, मैं कभी उड़ नहीं सकूंगा. खरगोश मुस्कुराया और बोला, कोशिश करना, कभी मुझ छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. अगले चंद दिनों में खरगोश नन्हे परंदे की हौसला अफजाई करता रहा. वो उसे हल्की फुल्की छलांगें लगाने को कहता, ताकि वो अपने पैरों को मजबूत कर सके. आस्ता आस्ता परंदे ने अपनी हमतें बहाल कर ली. एक दिन परंदे ने अपने पैरों को जोर से पथराया और आखिरकार उड़ने में कामयाब हो गया. वो खुशी से चिल्ला रहा था और खरगोश नीचे ताले बजा रहा था. ये सीखने का दिन था कि कभी ऊँट नहीं हारनी चाहिए और अच्छे दोस्त हमेशा साथ देते हैं. English. One day, a little bird tried to fly out of its nest, but as soon as it took off, it fell to the ground. Nearby, a rabbit was sitting and saw the bird fall. The rabbit quickly ran over and picked it up. Are you okay? The rabbit asked. The little bird sighed. I can't fly. I'll never be able to. The rabbit smiled and said, never give up. I will help you. Over the next few days, the rabbit encouraged the bird. It asked the bird to take small jumps to strengthen its wings. Slowly, the little bird gained confidence. One day, the bird flapped its wings hard and finally flew. It chirped happily while the rabbit clapped from below. That day, they both learned an important lesson: never give up. And good friends always support each other. Image prompt. A small, fluffy bird with bright feathers trying to fly for the first time, but falling to the ground. Nearby, a friendly rabbit with soft brown fur is watching with kind eyes. The background is a lush green meadow with colorful flowers and a clear blue sky. The scene is warm and cheerful, symbolizing friendship and perseverance. अब मैं तस्वीर बना रहा हूँ. Woke at dawn, inspired by nature's beauty. Ethan worked the fields with his old tractor, while Amelia nurtured their fragrant garden with her green thumb. At day's end, they shared